Assalamu alaikum students. Previously we were discussing the theme of economy. So a topic of particular interest for the students is economy of Pakistan. What are the economic problems of Pakistan, their causes, and what are the possible ways out for resolving these issues. Uh, a few things that I want to mention for the knowledge of students. First, if you want to understand economic problems of any state, अब यहाँ पे स्टूडेंट से कन्फ्यूजन क्या होती है, ये प्रॉब्लम कहाँ पे करते हैं स्टूडेंट्स कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम और उनकी काजेज़ को मिक्स कर जाते हैं, बजाय प्रॉब्लम्स बताने के वो काजेज़ बता रहे होते हैं. सो व्हाट इज़ एट द रूट एंड व्हाट इज़ द प्रोडक्ट, इसमें डिफरेंस है. सो अगर आपने किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ देखनी है, वेदर द इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ दैट कंट्री इज़ एलिंग, वेदर दैट कंट्री इज़ गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, तो वो कोई 5-6 इंडिकेटर्स हैं जिनको हम मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कहते हैं. वहाँ से हेल्थ ऑफ एनी इकोनॉमी कैन बी गेज्ड. वो कौन से? नंबर 1, सबसे पहले जिस चीज़ पे आप बात करते हैं वो जीडीपी ग्रोथ है. What is the concept of GDP growth? Over the period of time, population आपकी increase हो रही है. So in order to cater to the needs of that population, you need to increase employment. इसी हिसाब से आपको ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज देनी है, आपकी प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए. So आपके GDP के ओवरऑल जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनकी जो ग्रोथ है, उनका जो इनपुट है, दैट शुड इंक्रीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड दिस इंक्रीज शुड बी सस्टेनेबल. सो पाकिस्तान की इकॉनमी का सबसे जो पहला मसला है, व्हाट आर द मेजर इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान, उसमें पहला मसला है स्टैग्नेंट जीडीपी ग्रोथ. हमारी जो स्टैग्नेंट जीडीपी ग्रोथ है वो पहला मसला है कि हमारी इकॉनमी ग्रो नहीं कर रही. अब इफ़ यू टॉक अबाउट द ग्रोथ लेवल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़, तो आपके इवन रीजन में बांग्लादेश, इंडिया, दे हैव क्रॉस्ड 6%. तो पाकिस्तान, इट्स जीडीपी ग्रोथ हैज़ बीन बिलो 5. Although Pakistan's GDP growth was a model to be emulated for the South Asian countries, पाकिस्तान की जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमीशन है, इसने ट्रेन किया है चाइनीज़ को. इंडियंस हैव बीन कॉपीइंग द मॉडल ऑफ डेवलपमेंट फॉलोड बाय पाकिस्तान. लेकिन पिछले कुछ डेकेड से वी आर होवरिंग अराउंड 5%, 5% से नीचे रहे हैं. 5% का जो फिगर है वो क्रॉस नहीं कर सके, एंड आवर टारगेट इज़ एट लीस्ट 6%. सो ये जो स्टैग्नेंट जीडीपी ग्रोथ है, ये पाकिस्तान का पहला मसला है. आफ्टर दैट जो दूसरा मसला है जीडीपी का, दूसरा इकॉनमी का, दैट इज़ योर ट्विन अकाउंट डेफिसिट. सिंपली ट्विन अकाउंट डेफिसिट को आप इस तरह समझ सकते हैं कि हमारे पास जो है वो एक तो एक्सपोर्ट्स जो है वो कम है और इंपोर्ट्स ज़्यादा है. दूसरा आपका जो आप जिसको फिस्कल डेफिसिट कह देते हैं वो ये है. अब व्हाट यू नीड, आपके पास जस्ट फिगर्स होने चाहिए, पिछले कुछ सालों के फिगर्स होने चाहिए जिसमें आप बता सकें कि पाकिस्तान में ये जो ट्विन अकाउंट डेफिसिट है ये इस तरह प्रमोट होता रहा है. और इसमें आप डिस्कस कर सकते हैं कि पाकिस्तान क्यों अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं इंक्रीज़ कर सका, क्यों पाकिस्तान में इंपोर्ट, मतलब इसमें ऑब्वियसली एक प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम की नेचर में आप उसकी काजेज़ में जाएंगे. अगर आप, आई एम टॉकिंग अबाउट द पैराग्राफ दैट यू वुड बी राइटिंग. So in that paragraph you would be writing the reasons for these twin account deficits. तो current account deficit और फिर fiscal deficit. उसके अलावा another problem of पाकिस्तान, उसमें फिर foreign exchange reserves वाली बात भी आप डिस्कस कर सकते हैं कि फिर रिजल्ट क्या निकलता है इसका कि पाकिस्तान के पास foreign exchange reserves नहीं रहते इस deficit की वजह से. Another problem is low revenue generation. तो एक जो रेवेन्यू साइड पे गवर्नमेंट का काम है कि हमारे पास वी स्पेंड मोर एंड वी सेव लेस.
ہمارے پاس اتنی کلیکشن نہیں ہوتی جتنا ہم اسپینڈ کرتے ہیں، تو اس سے جو ایک امبیلنس کریٹ ہوتا ہے. تو پاکستان کی، جس کو آپ سمپلی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بھی کہہ سکتے ہیں، چونکہ ٹیکس اس کے علاوہ، ٹیکس کے علاوہ بھی ریونیو کے ہیں تو سورسز ہیں، نان ٹیکس ریونیو سورسز بھی ہیں، جیسے پیٹرولیم لیوی ہے، پیٹرولیم سے جو ہم لیتے ہیں. تو آپ اس کو ریونیو سائڈ والی بات کر سکتے ہیں کہ پور ریونیو جنریشن اینڈ اوور اسپینڈنگ. اسی سے پھر ہم ڈیٹ کی طرف جاتے ہیں. تو ایک آپ پاکستان میں جو ریونیو جنریشن ہے اور جو اسپینڈنگ ہے، یا اس سے جو بجٹ ڈیفیسٹ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، آپ یہ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ کتنے پرسنٹ آف جی ڈی پی ہے ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ. اس کے علاوہ another problem is poverty and unemployment. ان کو آپ کلیکٹیولی ڈسکس کر سکتے ہیں. اب یہ بھی چونکہ کسی بھی اکانومی کے بڑے بڑے انڈیکیٹرز ہیں. whenever you talk about health of an economy, so poverty, there should be minimum people below poverty line, and that element should be controlled. اور اسی طرح انفلیشن ہے، انفلیشن شوڈ بی ان کنٹرول. انفلیشن بہت زیادہ ہو جائے تو دیٹ از ون آف دا بگیسٹ انڈیکیٹرز آف پور کنڈیشن آف دا اکانومی ان دیٹ اسٹیٹ. تو ہمارے پاس پاورٹی اینڈ انمپلائمنٹ از اے پرابلم. پھر اس کے ساتھ آپ انفلیشن ڈسکس کر سکتے ہیں. انفلیشن، اس میں فوڈ انفلیشن الگ سے آتی ہے اور باقی جنرل انفلیشن الگ سے آتی ہے. اس میں آپ سمپلی ڈسکس کر سکتے ہیں کہ انفلیشن کا لیول یہ. آپ انفلیشن کی ٹائپس تو کسی بھی اکانومی میں اگر آپ بات کریں تو 2 ٹائپس ہی ہیں. ایک ڈیمانڈ سے ہوتی ہے، ایک کاسٹ سے ہوتی ہے. کسی چیز کی کاسٹ بڑھ جائے یا کسی چیز کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں زیادہ ہو جائے. تو یہ 2 سائڈز ہیں انفلیشن کی، آپ یہ ڈسکس کر سکتے ہیں. پرابلمز یہاں پہ آپ آ کے ختم ہو جاتے ہیں. اف یو ٹاک اباؤٹ پرابلمز، تو پرابلمز یہی میکرو اکنامک جو انڈیکیٹرز ہیں انہی پہ ہم بات کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ڈیٹ پہ بات کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے، ہائی ڈیٹ برڈن ہے، تو دیٹ از اراؤنڈ مور دین 80%. تو جو مور دین 80% ہے پاکستان کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو، دس از a Herculean problem, a huge problem for پاکستان. اسی وجہ سے پاکستان ڈیفالٹ ہونے کی ساری ڈسکشن شروع ہوئی، اور اسی وجہ سے پاکستان کی جو ریونیو جنریشن ہے وہ بہت زیادہ سٹریس ہو جاتی ہے. پاکستان کے پاس جو بھی ریونیوز ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے پبلک سیکٹر پہ جو اسپینڈنگ ہے وہ نہیں ہو پاتی. یہ ہمارے ہائی ڈیٹ برڈن کی وجہ سے. سو دیٹ آرگیومنٹ کہ کوئی بھی ریاست gets enslaved by the debt, تو that would come into discussion. اس میں آپ ڈیٹ کی ریزنز ڈسکس کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک تو جو ڈیٹ لیا گیا وہ اس کی اسپینڈنگ ٹھیک نہیں ہوئی. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا ہیومن ڈیولپمنٹ کے بجائے ہم نے اس ڈیٹ کی انفراسٹرکچر کے اوپر جو ہے وہ اسپینڈنگ کی، ریکلیس اس کی اسپینڈنگ ہوئی. پھر ریونیو سائڈ پہ ہم نے فوکس کیا نہیں، ہم ڈیٹ پہ تو فوکس کرتے گئے، لیکن اس طرح ہم ریونیو جنریٹ کریں اس کی طرف ہم نے فوکس نہیں کیا. سو اوور آل جو ویک اکنامک پالیسیز رہی ہیں اس کی وجہ سے ہمارا ایک یہ پرابلم ہوا. یہاں پہ آ کے پرابلمس ختم ہو گئے. ناؤ وٹ از مور امپورٹنٹ، یہاں پہ اس سیکشن میں یو نیڈ فیکٹس اینڈ فگرز اینڈ یو نیڈ سم ریلیونٹ ڈیٹیلز. ڈفرینٹ ڈیکٹس میں بھی آپ کمپیئر کر سکتے ہیں اکنامک پالیسیز. کوئی اکنامک سروے آپ دیکھ لیں، کسی ایک سال کا اکنامک سروے بھی آپ پڑھ لیں تو آپ کو ایٹ لیسٹ آئیڈیا ہو جائے گا کہ انفلیشن اوپر نیچے کیوں آ رہی ہے، جی ڈی پی اسٹیگننٹ ہے یا نہیں ہے تو کیوں ہے، یہ ساری چیزیں، ڈیٹ برڈن کیوں ہے، ان امپلائمنٹ اور پاورٹی کا لیول ان کنٹرولڈ کیوں. یہ ساری چیزیں آپ کو کسی ایک اکنامک سروے سے بھی پتہ چل سکتی ہیں. آپ کو ریلیونٹ فیکٹس بھی ملیں گے، اور اس جو سال ہے جو فسکل ایئر ہے اس کے اکارڈنگلی آپ کو ڈیٹیلز ملیں گی. باقی اگر آپ اف یو وانٹ ٹو گو ان ٹو دا ڈیٹیلز تو پھر اس کے لیے پھر ایشوز ان دا اکانومی آف پاکستان، ایس اکبر زیدی کی بک ہے، یہ پاکستان ایٹ 70 ہے، حفیظ پاشا کی یہ گورننگ دا ان گورنیبلس ہے. یہ بکس آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں سے آپ کو اکنامک پرابلمس کی جو ہے وہ ڈیٹیل میں یہ ساری ڈسکشن ملے گی. تو ریسرچ پیپر بھی کو پڑھا جا سکتا ہے اس پہ. اچھا، اب آتے ہیں کازز کی طرف. کازز امپورٹنٹ ہیں. اب کازز میں اگر ہم ڈیٹیل سے بات کریں، میں سارے کازز ڈسکس کرتا ہوں، اس کے بعد اٹ از اپ ٹو یو کہ آپ پیپر میں کتنے کازز لکھتے ہیں. سب سے پہلا امپورٹنٹ کاز آپ بغیر کسی جھجک کے
Without any hesitation, you can quote that elite capture is the biggest problem of economy of Pakistan. Uh, इसमें in my previous lecture, I discussed what is elite capture. That all of the resources of the state, whether it is land, it is labor, or it is capital, ये तीन चीज़ें किसी भी इकॉनमी की जान होती हैं. So these essential pillars, land, labor, and capital, elite have access to all of this. Elite have control on the economic policy making. They are sitting in the corridors of power. They have control on the job market because of their better education, because they are equipped according to the requirements of the market. So economic market is in their control. Then they have control on the education system, so they are able to suppress any voices for change, and by dint of their political power, they have the hard power of state machinery to suppress resistant voices. So they are able to preserve that capture. So that elite capture have been responsible for lack of equitable distribution, lack of distributive justice, or lack of equality, economic equality in the state. So they have been devising such economic policies in which their interests are being served and the overall interest of the society is not being served. So this elite captured economy of Pakistan is the prime reason for poor economic conditions, for the poly crises that we find ourselves today. The second issue is unbridled population control. Unbridled population control, according to some researchers, is at the heart of the problem. They believe that no matter how bad economic policies are and how much elite capture Pakistan has witnessed in the 7 decades, things would have been still better if this population growth would have been controlled. So this have been on the part of governments. It has been their criminal negligence that they have failed to control the ever increasing mouths that need to be fed, and state does not have the enough resources for feeding such. Pakistan is one of the most populated countries in the world. Currently, it is at fifth, and if population explosion is not stopped, तो हम माशाल्लाह कोई सन 2050 तक we would be around 340 million, or more than that. So Pakistan would be among the most populated countries. पहले कोई 2-3 में माशाल्लाह आ जाएगा. So this is another challenge. Population explosion नहीं कंट्रोल की जा सकी. So this created a lot of issues. And you can also talk about climate change. Climate change has been a significant threat for Pakistan's economy. Periodic natural disasters have wreaked havoc on the economy of Pakistan, whether these are droughts or floods or cyclones or earthquakes or heat waves or erratic pattern of rains. So these multiple crises related to climate change have bleeded the economy of Pakistan. If we talk about recent floods, so there were losses to the tune of 33 billion for Pakistan, and they created a lot of unemployment and many other issues, damages to infrastructure, and damages to our agriculture sector, damages to livestock, and many more issues. So this climate change is another issue. Then basically this should have been at the top after elite capture. This should have been the second most important point that I am going to discuss. That is weak economic policies, uh, and political instability. Policy continuity
Even if some of the policies were not good, they would still have been beneficial for the country if different governments would have been allowed to continue, or if some good policies of previous governments would have been continued by the upcoming governments. So, all of the governments in Pakistan have found themselves hijacked and controlled by the establishment. So these frequent governmental changes, coupled with weak economic policies, coupled with lack of policy continuity. So, so crisis of governance, coupled with weak economic policies, this is the second biggest important cause for poor economic condition. Now you can narrate multiple examples of weak economic policies. You can talk about that different sectors of economy have not been tapped. The policy of taxation, not tax providing tax havens, tax evasions, the policy of subsidy, the policy of investment on infrastructure instead of human development, ये बहुत बड़ा गैप रहा है, ये सीरियस गैप, जिसकी वजह से हम आज भी ग्रो नहीं कर सके। कि आप हायर एजुकेशन के लिए कितना बजट रख रहे हैं, आप एजुकेशन इन इटसेल्फ के लिए कितना बजट रख रहे हैं, आप हेल्थ के लिए कितना बजट रख रहे हैं, फिर आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर है किस तरह के प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ बना रहे हैं या रोड्स बना रहे हैं, फ्लाईओवर्स बना रहे हैं। तो अपेरेंटली जो जिन चीज़ों से वोट बैंक स्ट्रांग होता था, इस तरह के प्रोजेक्ट्स किए गए। देयर आर मल्टीपल काइंड्स। आप सब्सिडीज़ कितनी रेकलेस हो के दी हैं आपने, ये चीज़ें आप कोट कर सकते हैं वीक इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में। आपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया है यानी कैसे किया है, आपकी ट्रेड डिप्लोमेसी कैसी थी, दैट इज़ इकोनॉमिक पॉलिसी। आपकी जो है वो जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हैं, हैव यू बीन एबल to widen that geographical expanse of your exports. Your exports are going to UK, US, UAE, and a few countries in South Asia. You have not tapped Africa, you have not tapped many countries in Latin America, and your trade, this again is a policy that our trade is less than our trade with our regional countries is less than our trade with the distant countries across other continents. So these are some of the weak economic policies. So आप ये चीज़ डिस्कस कर सकते हैं और कमेंट वाली बात डिस्कस कर सकते हैं. Then another important reason is lack of technically trained human resource. So developed human capital, the lack of developed human capital is one significant reason for poor economic conditions in the country. We do not have trained human resource in any sector of the economy, whether it is services or agriculture or industry or blue economy or tourism. So we have not trained human capital for that. I was talking about previously weak economic policies. So another aspect of economic policies is our failure to attract investors. So attracting FDI, this depicts our weak economic policies. हम नहीं attract कर पाए FDI. So हमारे पास दूसरा प्रॉब्लम डेवलप्ड ह्यूमन कैपिटल का है. यू कैन डिस्कस अबाउट लैक ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन आवर हायर एजुकेशन. You can talk about poor educators, you can talk about the overall condition of education in our universities. You can also discuss lack of focus on science, mathematics, engineering, these subjects. You can also talk about overall flawed syllabus in the educational institutions and incompatibility of syllabus with the requirements of the market. So these have been the reasons for poor human resource that we have.
If our human resource would have been productive, we have been able to compete with the rest of the world. We would have earned a lot from the trade, क्योंकि हमारे products भी are competitive advantage with respect to the world would have been higher. We would have been able to compete in automobiles, in IT sector, in manufacturing, or in any other thing. So currently Pakistan is just producing clothes. Pakistan is exporting fruits. Pakistan is exporter of pharmaceutical products, sports equipment, and a few other things, for example, cement or cutlery. Pakistan's export base would have been widened a lot if we would have possessed trained human capital. So this could not happen. This is another important cause for poor economic conditions in the country that we already discussed. उसके अलावा other aspect of the issues, you can talk about lack of business friendly environment. This is another important aspect. You have energy crisis, you have bureaucratic delays, you have issues of security, so extremism and terrorism, you have issues of security, uh, and you do not have branding, you do not have enough sound trade diplomacy, so your government does not, and there is an issue of corruption and energy crisis. So governments have failed to provide incentives to investors to invest in your country. So lack of business friendly environment or poor performance in ease of doing business. So poor ranking in ease of doing business is another reason for the economic mess that Pakistan finds itself in today. So these were some of the major causes of poor economic conditions in the country. एंड अगर आप मज़ीद बात करना चाहते हैं सेक्टर टू सेक्टर, तो फिर अनदर इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकॉनमी. आई ऑलरेडी टॉक कि हमारे पास पोटेंशियल है. वी हैव इनफ पोटेंशियल फॉर टूरिज्म, वी हैव very high potential of blue economy. Currently, Bangladesh and India are earning around 4 to 6 billion from blue economy, and Pakistan is earning less than 1 billion from blue economy. So हमारे पास बहुत potential है, हमारे पास tourism का बहुत potential है. We should have been able to tap different sectors of economy. Lack of diversification of economy explains our trade imbalance. हम exports कर ही नहीं सके. We are just relying on imports. So आप ये चीज़ डिस्कस कर सकते हैं. पुअर कल्चर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आप ये डिस्कस कर सकते हैं. इसमें हमारे पास एक बहुत बड़ी रीज़न है पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी की, कि हमारे पास कल्चर ही नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप का. इस तरह फिर आगे काजेज़ काफ़ी बन सकती हैं, बट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड वेरी साउंड काजेज़ जिनको आप बड़ी आंखें बंद करके डिस्कस कर सकते हैं, और हमारे पास 9-10 पॉइंट्स मेजर हो गए. अब आते हैं इनके सॉल्यूशंस की तरफ. तो अब now that you have identified the causes, so for example we discussed revenue side of the government. So उसमें हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे पास जो flawed tax administration system है गवर्नमेंट का, that is one very important reason for poor revenue generation. Flawed tax administration system coupled with corruption. तो ये चीज़ डिस्कस की जा सकती है. तो अब आपने देखना ये है कि अब अगर आपने 10, हमारे पास कोई 6 से 7 प्रॉब्लम्स निकले थे, कुछ 7 to 8 इम्पॉर्टेंट आप काजेस डिस्कस कर लेते हैं, तो आपके पास कौन से वे फॉरवर्ड हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है. उसमें एक चीज़ तो ये है कि आपको साउंड गवर्नेंस चाहिए और इकोनॉमिक पॉलिसी एंड वाइज इकोनॉमिक पॉलिसीज चाहिए. साउंड इकोनॉमिक गवर्नेंस and wise economic policies. Your good governance with
with sound economic policies. ये एक पॉइंट होना चाहिए. उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स, आपके पास मैसिव ओवरहॉल ऑफ एजुकेशन सिस्टम चाहिए विद फोकस ऑन टेक्निकल एजुकेशन फॉर achieving developed human resource. So you need trained human capital. This is another aspect. उसके बाद फिर आप डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकानमी इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी इकानमी के बहुत सारे इश्यूज इससे रिजॉल्व हो सकते हैं. योर एक्सपोर्ट सेक्टर वुड ग्रो, योर डेट वुड बी reduced, your GDP growth would be ensured, poverty and inequality would reduce, unemployment would be controlled just by diversification of economy. So this is another important way forward कि जिससे आप जो है वो बहुत सारे इकोनॉमी के इश्यूज रिजॉल्व कर सकते हैं. You can talk about local government. Local government is very important अगर आपने बहुत से इश्यूज रिजॉल्व करने हैं, क्योंकि गवर्नमेंट वो साउंड इकोनॉमिक पॉलिसीज़ तब तक अचीव नहीं कर सकेगी. फिर क्लाइमेट फ्रेंडली पॉलिसीज़, आपको यू नीड क्लाइमेट अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन. तो क्लाइमेट कंट्रोल बहुत ज़रूरी है. तो क्लाइमेट और पॉपुलेशन, these two impending crises that are snowballing and that have the potential to engulf the whole country and the whole world. इन दो इश्यूज को आप इकट्ठे डिस्कस कर सकते हैं. यू शुड टॉक अबाउट पॉपुलेशन कंट्रोल एंड क्लाइमेट चेंज. सो एक ये इशू है, आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं. फिर टैक्स कलेक्शन सिस्टम जो है उसमें हमें अपने टैक्स कलेक्शन सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है जिससे हमारे टैक्स बेस बढ़ सके. सो वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम्स, तो फिर आप उसमें से कुछ 7-8 इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं. So this was a brief overview of major economic problems of Pakistan, their causes and way forward. इसमें अब मैंने कोशिश ये की है कि आप लोग प्रॉब्लम और काज को कंफ्यूज ना करें. प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स रहने दें इकोनॉमी की टर्म्स में. दैट शुड बी द मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स. हमारे पास पुअर एजुकेशन है, हमारे पास गवर्नमेंटल क्राइसिस है, हमारे पास ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, हमारे पास एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म. ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली उन 5-7 जो हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस किए उनको ही अफेक्ट कर रहे होंगे. सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड देयर काजेज, दे शुड बी केप्ट सेपरेटेड. देयर आर बाउंड्रीज बिटवीन काज एंड द प्रोडक्ट. सो दिस वाज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन दिस रिस्पेक्ट. बाकी अब आपको मैंने कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे दी है कि क्या मेजर इश्यूज रहे हैं हमारे इकॉनमी, काजेज क्या इश्यूज रहे हैं, मेजर काजेज क्या रहे हैं. And I have also discussed way forward. Thank you very much.